Hello everyone. In our previous video, you have learned about the preparation methods of haloalkanes using alcohols. In that video, we have prepared haloalkanes using 6 types of reactants with alcohol. Now the second part of preparation method is related with hydrocarbons. So let us learn how can we prepare haloalkanes using hydrocarbons. Hydrocarbons we here consider 2 types, that is alkane and alkene. So first of all we will discuss the preparation method using alkanes. As you all know that alkanes are the single bonded hydrocarbons. In alkanes, all the carbons are bonded with single bonds. So, when a single bonded hydrocarbon, for example, CH4 methane is reacted with a halogen, I am taking chlorine over here, in presence of sunlight, then the substitution reaction takes place. Chlorine substitutes hydrogen and we get CH3Cl along with 1 mole of HCl. As in this reaction, chlorine substitutes hydrogen and being added with hydrocarbon, so the addition of halogen is taking place. This type of reactions are named as halogenation. Halogenation means addition of halogen in any compound. Here we have used chlorine as a halogen, so we can say the reaction is chlorination. If bromine is being added, the reaction must be named as bromination. Fluorine is fluorination and for iodine it is iodination. So halogenation means addition of halogen, and as we have added chlorine, it is named as chlorination. Chlorination is a type of halogenation which is named after the name of halogen used in the reaction. So when any hydrocarbon reacts with halogen or added with halogen in presence of sunlight, we get haloalkane and HCl or hydrogen halide is released out. One more example we can perform. Ethane in presence of sunlight when reacted with chlorine, again one hydrogen is substituted. 2 carbons are there having same number of hydrogen, so we can replace chlorine by any carbon. We can write like this. आप ये भी लिख सकते हैं, और you can write like this. आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का IUPAC नेम सेम होगा. तो चाहे आप क्लोरीन को इस फर्स्ट कार्बन पर लगाइए चाहे सेकंड पर, दोनों सिमिट्री में है, इसलिए दोनों में से कहीं भी आप रिप्लेस करेंगे आपका IUPAC नेम सेम रहेगा. और जब तक हमारा IUPAC नेम चेंज नहीं होता, वो कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं होते, दे रिप्रेजेंट द सेम कंपाउंड. तो ये दोनों एक ही चीज है, आप चाहो जो लिख सकते हो. देन वन मोर एग्जांपल, आई टेक प्रोपेन व्हेन एडेड विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अब यहाँ पर हमारे पास सिमिट्री नहीं है. वी आर हैविंग 3 कार्बन्स विच आर हैविंग डिफरेंट डिग्रीज. तो जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल कंपाउंड आ जाता है जहाँ डिग्री चेंज हो जाती है, हमें ध्यान रखना है कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा. एज वी हैव 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड अगेन 1 डिग्री कार्बन ओवर हियर. सो एज पर द रूल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन or degrees of the carbon, we know that 3 degree is more stable than 2 degree and it is more stable than 1 degree. So
2 degree is more reactive comparatively. So hydrogen is being substituted by this 2 degree carbon, and our product must be CH3CH CH3. 2 degree carbon releases hydrogen and get bonded with chlorine, and as a byproduct we get HCl. So this is the method to get haloalkane using chlorination, or we can say halogenation, or the hydrocarbon with halogen. Note it down. As this reaction is taking place due to Cl2, or we can say it is chlorine bonded with chlorine. This chlorine is having same electronegativity in both the directions, so it is a non-polar molecule. When non-polar molecule dissociates due to some energy, as we are having sunlight over here, when the bond is dissociated, we get homocleavage. Both the chlorine atoms get equal number of electrons from the bond. The cleavage is homocleavage, and due to the homocleavage of Cl2, we get 2 chlorine free radicals. As the reaction is being started by these free radicals, so the mechanism used for halogenation, or we can say for chlorination, is free radical mechanism. As you have already studied in your 11th standard the mechanism for the free radical, same mechanism will take place in this reaction. We are not discussing here the mechanism, we just have to learn the reaction. But you must remember which type of mechanism is working over here. Now come to the next. Using alkene. By alkene we can get haloalkanes using 2 different methods. Number 1 is by addition of HX, and number 2 is by addition of H2. So as we know that whenever the hydrocarbon is unsaturated, or it is having double bond or triple bond, in spite of substitution, addition reactions takes place because it is comparatively easy to break pi bond than the sigma bond. So in unsaturated hydrocarbons, that is alkene or alkyne, first of all double bond is broken down. So let's study the first part, addition of HX with the alkenes. With alkynes the reaction takes place similarly. The simplest alkene consists of 2 carbons. 2 से कम कार्बन में alkene या alkyne पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स कार्बन्स के बीच में होते हैं. So we are having the simplest alkene, that is ethene. It is ethene. When being added with HX, that is halogen acid. As we know that the carbons are symmetrical, having same number of hydrogen, so no need to think where halogen is being added. You can add halogen in any direction, or we get CH2 single bond CH2 by breaking a single bond. Look here, as we are having 2 bonds, this is the double bond, and when we break one bond, what happens? One bond is remaining still over there, and by breaking one bond we get 2 free parts. These are the 2 free parts in the product where our reactant can be added. So on the one part we add hydrogen, and on the second we can add halogen. As both the carbons are in symmetry, you can add anything anywhere. So here I am going to add hydrogen and here the halogen. So the compound we get is CH3
CH2X. This is again a haloalkane which is formed by addition of HX in alkene. But what happens if more than 2 carbons are there? If there is no any symmetry in the compound? Let's discuss a reaction with propene. प्रोपीन में डबल बॉन्ड के पास जो कार्बन है उन्हें ऑब्जर्व कीजिए. One is having 2 hydrogen and another is having only 1 hydrogen. That means both are not in symmetry, both are not similar. So in that case, if the carbons bonded with double bond are not in symmetry, are not similar to each other, are not having same number of hydrogen, then we have to follow Markovnikov's rule. Markovnikov's rule क्या है? According to the Markovnikov, the addition of halogen during addition with alkene takes place on the double bonded carbon having less number of hydrogen. I repeat, according to Markovnikov's, during addition of HX with alkene, the anion goes to the double bonded carbon having less number of hydrogen. Which carbon is having less number of hydrogen over here? Yes, the middle one. So when we add HX, the negative part or anion goes to the carbon the bonds are free, goes to the carbon having less number of hydrogen. So I add halogen over here and hydrogen over here. So the product is 2-halopropane. It is 2-halopropane. As HX is forming the ions, so the mechanism is ionic mechanism. If HX is HCl, then how can we write the reaction? So I am writing an example using HCl as halogen acid. When propene is being added with HCl, as we know that hydrogen is cation and halogen is anion. According to Markovnikov's rule, anion, that is halogen, goes to the double bonded carbon having less number of hydrogen. So the product is CH3 CH single bond CH2. एक बॉन्ड टूट जाएगा जिससे 2 बॉन्ड्स फ्री होंगे and halogen or chlorine goes to the carbon having less number of hydrogen. This is the example for addition of HCl according to the Markovnikov's rule. One exception is here. If we are having the same reaction but with HBr, hydrogen bromide is used in place of HCl hydrogen chloride, and the reaction is taking place in presence of any peroxide. This is hydrogen peroxide. You can take any peroxide, sulfuric peroxide, sodium peroxide, barium peroxide, anyone. If the reaction is taking place in presence of a peroxide and addition of HBr is there, then as you all know that anti-Markovnikov's rule is followed. Anti-Markovnikov's rule is just opposite to the Markovnikov's, according to which the anion must be added to the double bonded carbon having more number of hydrogen. So the anti-Markovnikov rule is during addition of HBr in presence of H2O2 with alkene, the halogen is added with the double bonded carbon having more number of hydrogen. So the product will be
halogen is added with the carbon having more number of hydrogen out of double bonded carbons. पूरे कंपाउंड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन CH3 के पास है, लेकिन हमारा एडिशन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ होता है, इसलिए उनमें से जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां हैलोजन ऐड हो जाएगा. So this is the addition of HX. If the carbons are in symmetry or similar, you can add halogen on any carbon and hydrogen on the other one. But if the number of carbons are not in symmetry, then the double bonded carbons are having different number of hydrogens. So in that case, halogen is being bonded with Markovnikov's rule, that is on the carbon having less number of hydrogen. Whereas during addition of HBr in presence of peroxide, halogen is being bonded with the carbon having more number of hydrogens, that is anti-Markovnikov's rule. Addition of X2, that is halogen molecule in alkene. CH2 double bond CH2 when added with halogen. No need to remember any rule over here. यहाँ कोई रूल आपको याद नहीं रखना है, ना Markovnikov's ना ही एंटी Markovnikov's, because the molecule which is being added in the alkene having same elements, that is X halogen. So wherever you add the halogen, the product will be the same. दोनों ही कार्बन पर लगने वाला मॉलिक्यूल हैलोजन ही है, इसमें कोई हाइड्रोजन हैलोजन अलग अलग एलिमेंट्स नहीं है, दोनों ही हैलोजन है, इसलिए आप किसी को भी कहीं भी लगा सकते हैं. सो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, by breakdown of one bond we get two free ends, one halogen goes here and another will here. दोनों ही कार्बन पर एक एक हैलोजन लग जाएगा. एक और एग्जांपल करते हैं. अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन propene when bonded with halogen we get CH3 CH CH2 with two free ends where halogen is being added. यहाँ भी halogen और यहाँ भी halogen. If we are taking chlorine Cl2, then both the places are occupied by chlorine. अगर Cl2 लिया है तो दोनों जगह Cl लग जाएगा, ब्रोमीन लिया है तो ब्रोमीन लग जाएगा. इस तरह से हमारे डबल बॉन्ड को ब्रेक करके अगर सेम हैलोजन मॉलिक्यूल लगा रहे हैं, यानी कि दोनों ही एटम सिमिलर है, तो हमें कोई रूल फॉलो नहीं करना, सिर्फ बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों ही पोजीशंस पर वो हैलोजन लग जाएगा. सो दिस इज द एडिशन ऑफ हैलोजन इन एल्कीन. So we have studied that by the addition of halogen acid using Markovnikov's or anti-Markovnikov's rule, we can form monohalides, the haloalkanes having one halogen only. But by the addition of halogen molecule in alkene, we get dihalides. That means two halogens are there in a single molecule. So addition of halogen molecule gives us dihalides. If the same reaction is taking place in alkynes, we get tetrahalides by the addition of halogen, because there are two pi bonds which on breaking added 4 halogen atoms. Now come to the reactions other than hydrocarbon and alcohols. Other reactions. In other reactions, yesterday I have told you that 4 types of reactions you are having in your Rajasthan board syllabus. So the first one is Schwarz reaction. Schwarz reaction is a type of halogen exchange reaction. Means in this reaction we are already having an halogen which after changing its halogen gives us a new type of haloalkane. इन reactions में reactant में already एक haloalkane है, केवल हम उसके halogen को दूसरे halogen से exchange कर देते हैं. देखिए कैसे. Suppose हमारे पास RCl है, it is already haloalkane with chlorine. When it is reacted with silver fluoride,
It gives us RF and silver chloride is released out. ऑलरेडी हेलो एल्केन था, बनने वाला भी हेलो एल्केन है, लेकिन हैलोजन का एक्सचेंज हो गया, दोनों ने अपने हैलोजन चेंज कर लिया, क्लोरीन हटाकर फ्लोरीन आ गया, इसीलिए इस रिएक्शन को हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड कहते हैं। स्वार्ट्ज रिएक्शन इज पर्टिकुलरली फॉर एडिशन ऑफ फ्लोरीन। अगर हमें क्लोरीन या ब्रोमीन को हटाकर फ्लोरीन लगाना है तो हम इस स्वार्ट्ज रिएक्शन को यूज करते हैं। सो लेट अस स्टडी द स्वार्ट्ज रिएक्शंस। When RX, where X is chlorine or bromine, is reacted with metallic fluoride. Metallic fluoride, M is representing here the metal and F for fluorine. So if we react the haloalkane having chlorine or bromine with any metallic fluoride, the exchange of halogen takes place and we get fluoroalkane along with the halogen, metallic halogen. Metallic fluorides. Which type of metallic fluorides we can use? Few examples I am giving here. Silver fluoride, it is a type of metallic fluoride. Cadmium fluoride, mercuric fluoride, etc. These are the examples of metallic fluorides which we can use in place of MF. M for metallic and F for fluorine. So if we want to replace chlorine or bromine from the haloalkane and want to put fluorine in place of them, we can react according to the Schwarz reaction. So I am going to write few examples for Schwarz reaction. The first example, CH3Cl, when we reacted with silver fluoride, we get CH3F plus silver chloride. Simple double displacement reaction is taking place over here. I have exchanged both the halogens. As we are having silver with the valency 1 only, so having 1 fluorine, silver की valency +1, तो एक ही फ्लोरीन आएगा, तो हमारी रिएक्शन बहुत सिंपल हो गई। फ्लोरीन हटाकर हम क्लोरीन इजीली लगा सकते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी सेम होती है। वन मोर एग्जाम्पल, CH3Br when reacted with mercuric fluoride. अब मर्क्यूरी की वैलेंसी +2 होती है, तो फ्लोरीन भी 2 लगे हैं, तो यहाँ पर क्या हम इसी तरह से सिंपल एक्सचेंज कर सकते हैं? नो। फॉर दिस रिएक्शन वी आर हैविंग 2 फ्लोरीन्स, बट टू रिप्लेस द फ्लोरीन ब्रोमीन इज ओनली 1. इस 2 फ्लोरीन को हटाने के लिए ब्रोमीन कितने हैं हमारे पास? 1. So we have to multiply the number of moles of reactant. हम यहाँ 2 कर देंगे ताकि 2 ब्रोमीन से 2 फ्लोरीन रिप्लेस हो सके, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा 2 moles of CH3F. दोनों फ्लोरीन यूज हो गए। अब हमारे पास पीछे रह गया Hg2, जिसमें से 2 मॉलिक्यूल्स हमने निकाले हैं, तो फिर से हमारे पास आएगा Hg2, जिसके 2 बॉन्ड्स अभी भी फ्री है क्योंकि दोनों जगह से फ्लोरीन रिप्लेस हुआ है, तो बचे हुए दोनों ब्रोमीन 1 from 1 mole, 2 from 2 moles, दोनों ब्रोमीन इस Hg के पास लग जाएंगे एंड वी गेट HgBr2. सो दिस इज आवर प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम मेटालिक फ्लोराइड को यूज करके हैलोजन एक्सचेंज करवा सकते हैं और क्लोरीन या ब्रोमीन की जगह फ्लोरीन को रिप्लेस कर सकते हैं। And the reaction is named as Schwarz reaction. Fincastian reaction. It is also similar to the Schwarz reaction.
In this reaction, again halogen exchange is taking place, but here we replace chlorine and bromine by iodine in spite of fluorine. यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन को रिप्लेस करके आयोडीन लगाया जाता है. तो आयोडो एल्केन बनाने के लिए हम फ्रिंकेस्टियन रिएक्शन यूज करते हैं, जबकि फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए हम स्वार्ट्ज रिएक्शन को यूज करते हैं. सो हियर अगेन वी कैन से दैट we are already having haloalkane where X may be chlorine or bromine. When reacted with NaI or Ki, रिएक्शन आप NaI या Ki किसी से भी करवा सकते हैं. You can take any one out of these, both are having the same nature. So in presence of dry acetone, एसीटोन क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट कीटोन. कीटोन मेड बाय 3 कार्बन, CH3, C double bond O, CH3. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एसीटोन. नो नीड टू राइट फॉर्मूला ओवर हियर. आप सिर्फ ड्राई एसीटोन लिख सकते हो, पर आपको पता होना चाहिए एसीटोन क्या होता है. दिस इज द प्रोपेनॉन, कॉमनली नेम्ड एज एसीटोन. सो व्हेनेवर हैलोएल्केन कंसिस्ट ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन reacts with sodium iodide or potassium iodide, halogen exchange takes place in presence of dry acetone. So we get Ri along with NaX or KX. If we are taking NaI, we get NaX as a byproduct, and if we are taking Ki, we get Kx as a byproduct. So this is the Fincastian reaction to prepare iodoalkane. Iodoalkane हम इस प्रोसेस से बनाते हैं. तो हम लिखेंगे कुछ एग्जांपल्स इस रिएक्शन के लिए. RCl when reacted with NaI in presence of dry acetone, we get Ri and NaCl is released out. One reaction for the bromine also, RBr. Now I am taking Ki. It is not necessary that क्लोरीन के साथ NaI, ब्रोमीन के साथ Ki, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप किसी के साथ कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो. NaI क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों के साथ वर्क करेगा, Ki भी दोनों के साथ काम करेगा. मैं आपको दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिखकर दिखा रही हूँ. सो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन अगेन, Ri and KBr is formed. So these are the examples for Fincastian reaction. Fincastian reaction and Schwarz reactions both are halogen exchange reactions in which we are previously having chloride or bromide, and after the reaction we get iodide or fluoride. Now the next one, reaction with Tilden reagent. Tilden reagent, nitrosyl chloride. Is named as Tilden reagent. Nitrosyl chloride. The formula for the nitrosyl chloride is Cl N double bond O. This is called nitrosyl chloride NOCl. इसे हम NOCl कह सकते हैं, और ये इसका स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो ये रिएक्शन परफॉर्म करना बहुत इजी हो जाता है. इससे रिएक्शन को यहाँ प्रिपेयर करने में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी. सो NOCl is the nitrosyl chloride which is named as Tilden reagent. Whenever the Tilden reagent is reacted with primary amine, it is 1 degree amine. When amines are formed using only one-sided carbon chain, जब NH2 के साथ एक साइड में कार्बन चेन होती है उसे हम 1 degree amine कहते हैं. If 2 carbon chains are there, 1 and 2,
2 R लगे हैं तो इसे 2 डिग्री और 3 कार्बन चेन्स वाले को 3 डिग्री एमाइन कहते हैं. So I have taken 1 degree amine, that is primary amine. When nitrosyl chloride reacts with primary amine, we get haloalkanes. So let's write the reaction. Primary amine reacts with, I am writing below, nitrosyl chloride. रिएक्शन को इजीली लर्न करने के लिए आप क्या करेंगे, याद रखेंगे नाइट्रोजन के नीचे हमने नाइट्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन के साथ हमने ऑक्सीजन, क्योंकि हमें हेलो एल्केन बनाना है तो एल्केन की तरफ हमने हेलोजन रखा है. इससे हमें रिएक्शन याद करने में इजी रहता है. सो व्हाट हैपेंस व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर? These 2 bonds are broken down, these bonds are broken down, and as you can see that we get 3 products, RCl, N2 and H2O. These are the products. We get RCl, then N2 gas is released out and H2O, water is formed. So you can see that by breaking the bond like this, we can easily form the 3 products. The product number 1 RCl, the product number 2 N2 gas, and the product number 3 is H2O. So whenever primary amines are reacted with nitrosyl chloride, 3 products are formed: haloalkane, nitrogen gas and water. This reaction is named as preparation of haloalkane using Tilden reagent. And now come to the last one, that is decarboxylation, bromination. Decarboxylation, bromination. Carboxylation, addition of carboxylic group, that is COOH. इस ग्रुप को हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं. तो कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है COOH ग्रुप को ऐड करना. D, what does the meaning of D? D means removal. Decarboxylation says that we are removing the carboxylic group. So removal of carboxylic group, removal of COOH is named as decarboxylation. Bromination, it is addition of bromine. जब किसी भी कंपाउंड में ब्रोमीन को ऐड करते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ ब्रोमीन और ब्रोमिनेशन. सो decarboxylation, bromination is the process in which we remove the carboxylic acid and add bromine in place of it. कैसे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करेंगे और ब्रोमीन को रिप्लेस करेंगे? We take R CH2 COOH Ag. This is the silver salt of carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मेटल से रिएक्शन करवाते हैं तो मेटल और हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है एंड वी गेट सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. R की जगह आप कोई भी कार्बन चेन यूज कर सकते हो. सो दिस इज द सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. When it is reacted with bromine in presence of carbon tetrachloride. Bromine is a gas which is easily soluble in carbon tetrachloride. So in presence of carbon tetrachloride or solution in carbon tetrachloride and bromine makes the reaction fast. So we use bromine in presence of CCl4. One bromine goes with silver and gives AgBr. As soon as this silver and one bromine releases out, a gas can be released. CO2 gas release हो जाती है. So we get CO2 gas and ये सभी कुछ निकलने के बाद हमारे पास एक ब्रोमीन रह गया और एल्केन रह गया, which make bond with each other and we get RCH2Br. COOH is removed in form of CO2 and bromine is added. So it is decarboxylation, bromination. इस रिएक्शन को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ मैं बच्चों को.
ऐसा कोई इसका ऑथेंटिक लॉजिक नहीं है, लेकिन इस रिएक्शन को हम ऐसे याद रख सकते हैं। हमारे पास एक एसिड की बोतल है COOH, इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम कह सकते हैं हमारे पास एक एसिड की बोतल है जिस पर सिल्वर का कैप लगा है। दिस इज अ बोतल ऑफ एसिड विद सिल्वर कैप, दैट इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। When reacted with bromine in presence of CCl4, first of all we have to remove the cap. हम सिल्वर के कैप को रिमूव करेंगे and form silver bromide. As soon as you remove the cap, the CO2 gas inside the bottle comes out. So CO2 releases out and the remaining bottle is filled with bromine. बॉटल हमारी जो एल्केन की है वो ब्रोमीन से फिल हो जाएगी। ये कोई लॉजिकल चीजें नहीं होती है, सिर्फ हम कुछ रिएक्शंस को याद रखने के लिए स्टोरीज बना देते हैं तो उन्हें याद रखना आसान हो जाता है। तो यहाँ हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन ब्रोमिनेशन कौन सी रिएक्शन है जहाँ हम एक एसिड की बोतल सिल्वर कैप के साथ लेंगे और ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएंगे CCl4 की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले हमारा ब्रोमीन सिल्वर के कैप को रिमूव करेगा, AgBr बनाएगा। जैसे ही सिल्वर का कैप रिमूव हुआ, अंदर से रखी हुई CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, रिलीज हो गई और उस बॉटल में ब्रोमीन फिल हो जाएगा, तो हमें एल्केन ब्रोमाइड मिल जाएगा। सो दिस इज द डीकार्बोक्सिलेशन ब्रोमिनेशन। जरूरी नहीं है आप इस तरह से याद करें, आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं। Whenever silver salt of carboxylic acid is reacted with bromine in presence of carbon tetrachloride, we get bromoalkane, silver bromide and carbon dioxide gas releases out. तो नोट कर लीजिए इसे भी। आज हमने हेलो एल्केन बनाने की सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट कर ली है। हमने पिछले वीडियो में हेलो एल्केन प्रिपेयर किया था अल्कोहल के साथ। आज हाइड्रोकार्बन और दूसरे मेथड्स के साथ हेलो एल्केन की प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। राजस्थान बोर्ड की बात कर रहे थे तो यहाँ केवल मोनोहैलाइड्स नहीं हैं, हमारे कोर्स में डाईहैलाइड्स, ट्राईहैलाइड्स एंड टेट्राहैलाइड्स भी हैं। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डाईहैलाइड, ट्राईहैलाइड एंड टेट्राहैलाइड की प्रिपरेशंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो केयरफुली एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज प्रैक्टिस द रिएक्शंस बाय राइटिंग इन द नोटबुक so that you come to remember all the reactions and able to understand them properly. Thank you once again.